performing arts, everything. And the latest is Parvaz, the people of determination. So they take care of events, for those people, by those people. So that is our initiative. And I want to thank Rocky and I want to thank Sanjana for coming on board with their amazing, new inspiring author. And we really wish this association and collaboration goes a long way. Today we just want to have, remember what we are here for, our 75th independence, and celebrate this day with all your little thoughts, poetry, anything that you want to share here. I am Rocky, and first of all, I would like to also thank the family of the Hive for giving us this venue and for this auspicious occasion. And secondly, I would like to thank Asian Literary Society. The Dubai chapter is headed by Nishaji, and we are here not only to celebrate independence, not only to celebrate the spirit of independence, but we are here also for the love for literature. We are here. Independence is one of the greatest combinations that you can have, because that's where your patriotism and emotions come out in the most brightest way. That is what NIAC Global is all about also. New Inspiring Authors Club is all about celebrating literature and writing. As a global international community, we are here to support writers where we get inspired, and we also like to inspire one another through our literary journeys and literary aspirations. So NIAC Global and Asian Literary Society, once again, thank you all for embracing this amazing, auspicious ceremony. Thank you so much. I know that all of you are here supporting arts in this today. Frankly, when me and Disha decided to do this event, it was just a thought. We have to do something for Indian independence, because that was the closest occasion coming in this month. We probably met only 3 weeks back. She was still in India, and then the journey started from there, the thought started from there, the process started from there, and frankly, we are so happy that you all are here today supporting us, being an Indian, understanding what independence is. Independence for me is where I don't have to think what I want to do or where I want to go. And I think being an Indian teaches you that. I'll give you a very short example. When I drive here, people ask me how fast and how rash sometimes you drive. How can you take cuts? I said, एक बार ना इंडिया में गाड़ी चला के देखो, दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते हो. And I think that's what makes me feel proud as an Indian. I can do anything, anywhere, anytime. So thank you all for being here. NIAC Global is very happy and proud to be associated with ALS. And this is only the start of the first event that we are having, and we've got many more to go, obviously with your support. Hello, my name is Varun. I will recite a poem called from Marathi at Vilasat at Hive. सुबह सुबह एक हाथ की दस्तक पर दरवाजा खोल देखा, सरहद के पार से कुछ मेहमान आए, आंखों से मानू के सारे चेहरे सारे सुने सुनाए, पाँव हुए हाथ उठाए, आंगन में आसन लगाए, और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोज पकाए, पोटली में मेहमान मिले, पिछले सालों की फसलों का बोझ लाए, आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था, और तंदूर मीठे गुड़ का जायका तक की खा शायद खाद होगा, सरहद पर कर्राज सुना है किसी गोली, सरहद पर कर्राज सुना है कुछ खाबों का भूख है। मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे
बार भी राह में मरना शौक़ों के समान है। एक हीरों की कुर्बानी, एक हीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। Ravi, we are so proud of you. So proud of you. My name is Panish. I was born and brought up in Dubai. I am 19 years old. I am a student in the UK. I study accounting and finance. I've been doing poetry since I was 14. And I've won loads of national competitions. Not too bad, but yeah. And I hope you like my poem. So, yeah. Pardesi. A person not native to the country, an alien or stranger, or someone who just doesn't belong. The word Pardesi and I have been best friends forever. It's followed me every time I went to India. I heard in the casual conversations of aunties. I smelled it in my cup of chai. I felt it in the weight of my jhumkas, and I saw it in my plate full of jalebis. Pardesi. They call me that because I speak English better than Hindi, but you see, my parents taught me to learn the language of my colonizers before I learned mine, so that I'm respected in a society that they never were. It's true. जज्बातों को बयां करने के लिए मैं कभी हिंदी का उपयोग नहीं करती, क्योंकि मेरी हिंदी मुझे ही समझ नहीं आती. My tongue speaks the languages, but my heart speaks none. So tell me, how do I tell my mind that the languages I know don't know me at all? Pardesi. They call me that because I wasn't born in my motherland. That because I did until I was 5, but when I did, I saw more than just cows and litter. I saw beauty with its own flaws, just like the moon with its crevices and a model before she is airbrushed. I saw pretty skies and a heart big enough to fit all the people watching me today. Pardesi. They call me that because I don't know how to bargain. I'm too gullible. But I do know that bargaining runs in the blood of every Indian. So that makes me a rare blood type, but not a Pardesi. Because you see, my ancestors migrated from Pakistan to India because they believed that this land was theirs. Their land was a house full of dreams and aspirations. Their land to grow auntie parents and kapiti bache. Their ashes were scattered in the soil of every state just so that they could belong to this land. And I arise from that soil. So tell me, how am I a Pardesi? You are not a Pardesi. I'm from Kerala basically, and I'm a visual artist as well as a creative writer, but I can't do rote. I mean, they did a fantastic job, which I can't, so I have to read it, looking into my diary or journal, whatever. I have just 9 more months until the Nadak is upturned. Revolutionaries build their castles on distant lands. Hoofed among the strong forces of oceanic land, the mirages mirror one another, until it's just one huge labyrinth, and the eye cannot see the truth, wandering aimlessly, fighting a vain war. Often we end up on shores, seeking shelter. We assume it houses just one for comfort, while invisible hands rise the throat, silently by night, relentlessly. Muffled cries, moans, sighs. But that's just it. I have just 9 more months until the Nadak is upturned, and its death will down on all of us. It's just the scarred story of a common soldier. Hope all are doing good. Yes. Hopefully all are doing good. Confirm. First of all, I would like to thank Sanjana and of course Rocky and Shaman. Thank you so much for this gathering and this opportunity, because I'm very happy to hold this flag like this. And I know everyone. All are very happy. We all are. And of course, Sanjana just asked a question. What's independence mean to each of us? For me, simply a word.
India. For me, independence means that word. That's India. Will you enjoy the freedom that you are enjoying or enjoying in India anywhere else? No. Yeah, of course. It's not possible, right? And of course, I know there are a lot of problems there. Maybe as a person, I never faced anything there. In my case, I was so free there, but there are problems and I know that. But instead of saying there is problems are there, we have all the right, we have that independence, we have that freedom to take a broomstick and to clean the mess there. Maybe the citizens, those who are that much lucky in the world, to take a broomstick by ourselves and to clean the mess there. So, for me, independence means that simply India, and that try to take that broomstick and to clean the mess there. Thank you so much. Example of what independence is. I totally agree with you. And we have full freedom to think the way we do, and that is what India is all about. Yes. Beautiful thoughts. Thank you so much. Thank you. My name is Meera and I'm doing my 8th standard. So I wrote this poem and it's called Bharatiya Sanskriti Ke Rang. And I would like to... A little louder. Yeah, I'm sure. very happy to hear your buland awaz. So the poem's called Bharatiya Sanskriti Ke Rang and I would like to recite it in audible. भारतीय संस्कृति विविध और अद्वितीय है, इसकी अपनी कृपा और सुंदरता है। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति की सराहना की जाती है। भारतीय संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में चमकती है। आगरा में ताजमहल जैसे भारतीय स्मारक दुनिया भर में अपने अनोखेपन के लिए जाना जाता है। हर साल दुनिया भर से लोग भारत घूमने आते हैं। बस इन खूबसूरत संरचनाओं की यादों को संजोने के लिए। भारतीय संस्कृति की महानता यही नहीं रुकती। भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है क्योंकि अलग-अलग राज्यों के लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, तमिल, मलयालम, बंगाली और गुजराती। उल्लेख नहीं है कि भारतीय संस्कृति सराहनीय है क्योंकि यह अपनी रचनात्मकता और विलक्षणता को व्यक्त करता है। कई रोमांचक और मनोरंजक क्षेत्रों के माध्यम से, जिसमें संगीत, नृत्य, कला और नाटक शामिल हैं। हमारा भारत अद्भुत से पूरे है। हमें अपने देश की कदर करना सीखना चाहिए। हमें अपने देश का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमें अपने देश को संजोना चाहिए। जय हिंद। Thank you. Can you say Jai Hind once, Shikha? Jai Hind! Jai Hind! मेरा नाम किया संतोष कवि। मैं आज आप सबको एक प्रेरणादायक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे भी बहुत प्रेरणा दी है। इस कविता के कवि है आलोके त्रिपाठी जी। इस कविता का शीर्षक है कुछ करना है तो डट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसे, बिना काम के मुकाम कैसे, बिना मेहनत के दाम कैसे। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसे। निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तुझे तेरे मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनके जिंदगी में आज भी झमेले हैं। द्वारा लिखी हुई 4
बनता है. Please आप यहाँ आइए. She'll read yours, but you be here, please. रंग कर, गति अपनी तेज कर, कौन खड़ा है तेरे रास्ते में दीवार बनकर? जीत ले सारी मंजिलें अंगार बनकर, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं. My heartfelt gratitude to all people. So actually it's for the first time getting an opportunity to be here in UAE for the first time. So it's you deserve a big congrats. Thank you. Actually expect some more events like this. Actually I couldn't write anything new, but I will write one of my poems which got published in this anthology. So let me recite. Thank you. This is my second. Here we say something about me. I'm a research scholar and I'm doing my research in Calicut University on the topic transformational potential of cancer. Transformation potential of trauma or in cancer narratives. And one more thing, I'm a poet and teacher by passion, and I have published 3 books, one from Canada and 2 from India. Basically from Kerala. And one person was there in Delhi for this Asian Literary Society Awards, and they got Women Achievement Award for Element 2021. And it's so happy to be here. It's a tribute to all the soldiers. It's a thoughts by the widow of a soldier. Okay. Thank you. I am a cancer survivor. I forgot to tell you. Oh my God. Amazing. You are an inspiration, and Nancy, you are an inspiration for us. We are really honored and privileged to have you here. Thank you so Actually, I much. lost my voice, and the doctor said I would never talk. Wow. So that I think it requires a standing ovation. Yes, we must. It requires it before you. Standing ovation for you. Of course you must. see the case number. Can you tell me? I will raise my voice. Soldier's widow. I'm the soldier's widow. I'm here not to mourn for him, but to praise him for what he was. He was our world, but he left us and had gone to the other world. Our son, if we are too small to know that he will not come again on leave. He was here for his vacation, but he got the urgent call. I couldn't trace a streak of hesitation when he received the urgent call. The very next day of his arrival, he might have been sad to depart us. He hid his heart's sobbings just to make us relieved. We'll be back soon, had promised before he left us. He had kept his word. He came back soon. And he was back, but no smile left on his face. We couldn't hug and welcome him. He was in a deep sleep. My son told his sister, our pa got special duty to fight with aliens. He is in his special spacecraft. None dared to correct him, as none dared to spoil the Chinese hope. The real martyr and patriot he is, much impressed of his unrelenting devotion. He couldn't do much for his family, but he gave everything for his motherland, to the land where we peacefully sleep now. When a soldier breathes for his last time, he will be ready to kiss the death bravely as he dies to safeguard his motherland. It's so painful to see that our country is still under the clutches of poverty, violence, and anarchy. Soldiers like him, innumerable, have lost their lives in their duty to protect the motherland. The rulers must open their eyes to the truth and work for the real progress of our country.
It's so sad that the conflicts are not over. A peaceful land is destined deranged. Thank you. Wow. तो मुझे लगता है उसके साथ साथ एकता की भी बहुत जरूरत है हम लोगों को। उस एकता पे ही मैं 4 लाइनें बोलूँगी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन जिन जवानों ने जान गंवाई थी, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन जिन जवानों ने जान गंवाई थी, उनमें ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना उनकी पहचान ईसाई थी। उनमें ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना उनकी पहचान ईसाई थी। आज भी खुद की सोच को क्यों ना आज़ाद बना लें हम, राम के घर ईद मना लें और रहीम के घर दिया जला लें। सुकून जो है कि कुछ को कहीं भी सुकून नहीं मिलता, कुछ को कहीं भी सुकून नहीं मिलता, तो कुछ को सुकून से सुकून नहीं मिलता। कुछ को कहीं भी सुकून नहीं मिलता, तो कुछ को सुकून से सुकून नहीं मिलता। कुछ तो प्यार की दरकार करके रह गए, तुझको कभी तू नहीं मिलता। एक पहले ताउम्र जो वर्ड है, राइट, लाइक ऑल माय लाइफ, ताउम्र एक वर्ड है। ये पहली शायरी थी मेरी, हमारे बहुत सालों के बाद लिखा था कि जवाबों को ढूंढता रहा मैं ताउम्र। और शायद आप लोग रिलेट कर पाओगे, यहाँ पे इंस्पायर्ड हो सकता है। आई एम जस्ट शेयरिंग द इमोशंस। और चेक को ताली बजा दीजिएगा कि जवाबों को ढूंढता रहा मैं ताउम्र, जवाबों को ढूंढता रहा मैं ताउम्र, काले पन्ने भरता रहा मैं ताउम्र, अपने ही हक से बचता रहा मैं ताउम्र, घर गया कई बार लेकिन घर आया मैं ताउम्र। एंड इसके लिए मुझे भी थोड़ा सा उम्र मेरी भी हो रही है, फोन की जरूरत पड़ेगी। एक सिफर वर्ड है, राइट, लोगों को जीरो सिफर। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कुछ फ्रेंड्स को भेजा, बोले सब कुछ पढ़ दिया, बोले वो सब ठीक है, सिफर क्या है। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, सिफर इज जीरो, राइट। तो ये सारी गेम यहाँ पे जो हो रही है वो सिफर की हो रही है। एक के पीछे कितने सिफर, तो ये सिफरों की खेल में सफर करता रह गया। वक्त बदला, लोग बदले, मौसम बदले, मैं सफर करता रह गया। उस खेल में सिर्फ सफर था ये जाना देर से, पहले अनजान हो अब जानबूझकर मैं सफर करता रह गया। जिंदगी का सफर था यह सफर जिंदगी हो गई, ये मायनों की हेराफेरी में मैं सफर करता रह गया। सब बदले सफर में, मकसद बदला, मंजिल बदली, हमराही भी बदले, मैं सिर्फ सफर करता रह गया, सिर्फ सफर करता रह गया। Thank you for sharing with us. So he has written something which I can say. We salute the gallant freedom fighters who diligently fought for centuries. Few unknown names such as Rani Chauta, Lachit Barfukan of our home kingdom, the brave warriors of Battle of Salganti, the 75 a day heralds as the future of New India. Recently, after having fought against COVID, the country emerged as world power. The growth in geopolitical circles around the world is a great achievement, which paves path to permanent membership of UNSC, which would help us against the nefarious designs of China. The tech economic development, the humane touch by our great nation by providing vaccines and food without any hegemonic design speaks a lot of Seven Chinese culture of our oldest living civilization. For better tomorrow, I will upon each one of us to rise our caste, creed, religions, and unitedly we should join hands for a developed nation. Yes, absolutely. So it's about freedom. Are we really free? Okay, so the speech was about are we really free? And it's in a context where all of us dream. How many of us dream? All of us. There are some who don't dream, who are those who don't dream? Okay, good. So I am dreaming about freedom and about a perspective of what freedom can be, right? So in that dream, I am dreaming to a point and after that I get disturbed.
In Hindi, I want to just, some of us who don't understand Hindi, मैं एक ऐसे सपने के बारे में बोल रहा हूँ जहाँ पे आप आज़ादी के बारे में सपना देख रहे हो। आज़ादी की कंट्री में कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में मैं इंग्लिश में संवाद करूँगा। So I am sleeping and I am a fake prime minister. Okay, I am dreaming of a fake prime minister. दोस्तों, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर इनासियो रॉड्रिक्स, I will be on my state visit from tomorrow onwards. I am the global prime minister, not of one country but of the world. दोस्तों, I am on my first state visit. I enter my first state, and what do I see? Everybody has a house to stay, and those people who don't have a house, the people who have built their houses are building houses for the homeless. Not a single person on the street today without a shelter. How good is that? I look at my delegate and I say, indeed, we have done a great job. Dosto, I go to the second state now for my visit. And what do I see? Everybody is eating. Milk and honey is flowing on the earth. No one is hungry. No one is sleeping without food. I look at my delegate and I say, we have done a great job. Dosto, I leave that state and I go to the third state for my state visit. And what do I see? People are dancing, happily partying, and everywhere around lights and music. What do I see? I ask this gentleman who I meet, why is everybody dancing and making music? He says, under your policies, we have got lot of employment. People have enough and more money to share their meal with friends and family, and that's why they are happy. I have a satisfied look, and then I go to the fourth state. Dosto, what do I see in this state? I see in my hotel room a newspaper which I pick up, and I try to read the news about the state, and it has no accident today, no crime today, no neighbors hurting any other neighbors, no death and no violence. In that state, I feel satisfied. And you know what happens then? Do you know what happened? Yeah, you wake up. The alarm rang! नमस्कार। मेरा अभी तक हिंदी के अंदर किसी को अच्छा सा प्रवचन देते हुए नहीं देखा। मैं बोल देता हूँ कि हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। ये इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, बहुत शोर की जरूरत नहीं है। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हम तो किरदार से अपने ही दिखाई देंगे। हम तो किरदार से अपने ही दिखाई देंगे। और आज के दिन के लिए जो लिखा था, थोड़ा सा तरन्नुम में पढ़ता हूँ कि सींच के सबने इस धरती को हिंदुस्तान बनाया है। सींच के सबने इस धरती को हिंदुस्तान बनाया है। सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम ने बुस्तान खिलाया है। सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम ने बुस्तान खिलाया है। और ये कहा था कि धर्म की बात है, तो धर्म कई है, बोली भी है, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। धर्म कई है, बोली भी है, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन सत्ता की लालच की खातिर नेताओं ने लड़ाया है। सत्ता की लालच की खातिर नेताओं ने लड़ाया है। सींच के सबने इस धरती को हिंदुस्तान बनाया है। और कि देश विदेश में नाम कमाया अपने लाल सपूतों ने। देश विदेश में नाम कमाया अपने लाल सपूतों ने।
खेल में भी व्यापार में भी झंडे को ऊंचा पाया है, खेल में भी व्यापार में भी झंडे को ऊंचा पाया है। तो ये थोड़ा अलग मिजाज का बोलता हूँ जिसमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज आ जाएगी कि टेक्नोलॉजी हो या आईटी हो अपना सिक्का चलता है, टेक्नोलॉजी हो या आईटी हो अपना सिक्का चलता है। एजुकेशन में भी इंडिया ने अपना नाम कमाया है, एजुकेशन में भी इंडिया ने अपना नाम कमाया है। और अपने देश की सीमाओं पे वीर बहादुर पहरा दे, अपने देश की सीमाओं पे वीर बहादुर पहरा दे। जिस दुश्मन ने की गुस्ताखी वो ही मुंह की खाया है, जिस दुश्मन ने की गुस्ताखी वो ही मुंह की खाया है। करना गुलशन की रखवाली अपनी भी है जिम्मेदारी, करना गुलशन की रखवाली अपनी भी है जिम्मेदारी। आजादी के मतवालों ने अपना खून बहाया है, आजादी के मतवालों ने अपना खून बहाया है। सींच के सबने इस धरती को हिंदुस्तान बनाया है। और ये मेरा मैसेज है देश के अंदर लोगों को कि देश के अंदर के गद्दारों एक दिन तुम पछताओगे, देश के अंदर के गद्दारों एक दिन तुम पछताओगे। अच्छे अच्छे सुरमाओं को वक्त ने वक्त दिखाया है, अच्छे अच्छे सुरमाओं को वक्त ने वक्त दिखाया है। दूर वतन से है लेकिन, दूर वतन से है लेकिन इस दिल में उल्फत रखते हैं, दूर वतन से है लेकिन इस दिल में उल्फत रखते हैं। सोने की चिड़िया को अपने दिल से नहीं बुलाया है, सोने की चिड़िया को अपने दिल से नहीं बुलाया है। और मक्ते का है कि जश्न-ए-आज़ादी पे मुनव्वर और तुम्हें क्या तोहफा दे, जश्न-ए-आज़ादी पे मुनव्वर और तुम्हें क्या तोहफा दे। सच्चे दिल से तुम सबको ये देश का गीत सुनाया है। Anybody who's left to recite something or speak something here? Anybody wants to come and share some thoughts? Please be free. I just have to, looking at things going around in this universe, the most thing that we do not cherish is the life that we live. And based on that, I was just writing a few lines. The title is The Perfect Life. In quest to live a life full of glory and happiness, with abundant love and affection, loads of wealth and prosperity, good health and wellness, we forget nothing but to live the life. Looking around, we just wonder, never take any time to ponder, all set to make the biggest blunder, holding the reins to never surrender, burning oneself in the tinder, we forget nothing but to live life. Believing oneself not to be the luckiest, we keep trying to be the quickest, trading the internal beauty within us, collecting the materials that's never ours, assuming that this is the perfect life, we forget nothing but to live the life. Thinking it's not the perfect life, it's just a myth which traps you by hurting everyone around you. You keep hunting for a perfect life, missing to live in the moment, forgetting ours is the real perfect life. Thank you. सजाते हैं खुशियों के बताते हैं Now this is not something about freedom or something like that, but this is something I'm feeling which we live day-to-day life actually. There are some things actually which we have in the back of the mind, but we humans we forget it actually. First thing is that that when we come across beautiful and kind-hearted people, we shouldn't hesitate to compliment them, as if we missed it, we lost it. So we should remember that. Secondly is don't look upon genuine and
genuine and good people around, try to be genuine and good yourself as someone might be looking for you. And the third thing is that, normally, I think all the women over here, and पूरे देश में, I mean, India में, Dubai में, कहाँ पर भी जाते हैं, women are facing, many issues in terms of, divorce case, all that whatever. So, I would like to tell the gentleman actually, if a man expects a queen in his life, then he should be able to keep and treat his woman like a queen. That's what he keeps believing actually. No, that's all. Thank you. Hello everyone. Namaste India. Away from India. आप जैसे जानते हैं हम सब यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए हैं। मेरा नाम नव्या है, नव्या गुल, और आज मैं आई हूँ, मुझे इनवाइट किया इन्होंने। मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहूँगी। आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई रियली वांट टू सिंग। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, मेरा इंडिया, मेरा इंडिया। Okay, good evening, ladies and gentlemen. Namaste. My name is Anand. I come from Bangalore, and I'm trying to set up my business here. I just got my license, and I'll be having my stamping done. Congratulations. Thank you so much. So this is the first event ever of this kind. Wow. Like I've never ever experienced something like this. I'm very fortunate to listen to a lot of people with so much of knowledge, so much of gyan, and so much of poetry is coming out. So this is really inspiring me to do something about it. I've never done this before, but I was like listening to this and said, why not? I should be doing something like this, or putting up few lines. I also have so much of thoughts, but I never thought of putting them on the paper and then reciting this. So this, I think, program is going to really be an inspiring thing for me. So I would be one among you sometime. How nice! That's really fantastic. Motto of NIAC, where we want people to love literature and get connected to literature. I'm really inspired. And the other thing, with respect to freedom, I'd like to share is, have you all heard of Sandeep Krishnan? Yeah. So I come from city of Bangalore. Of course, when we lost him, in Mumbai attack, we were all like, I was leading in one of the team to ensure, we are just, praying for him. And we ensured, there's a street made in his name in Bangalore. And because his story has to be remembered by all our children and the generation to come forward. So all our soldiers are contributing immensely to the country, and they just dedicate their lives for us, and I have a great respect to them. So that's what I would like to share in this film. Thank you so much. I don't know really what has happened so far, who's spoken and what's sung, but I have an idea. Of course, she briefed me as to what is expected. Very nice to hear about Bangalore. I lived in Bangalore for some time. I started my career with Taj West End. So we were a management trainee those days. So I grew up to be a Taj general manager. My first hotel as a GM was Taj President in Mumbai. I don't know if you know that. At Cup Parade. And then Goa, Holiday Village, Maldives, and Singapore, and so on and so forth. Anyway, I will not take much time. I know that the passion and the enthusiasm year on year, it may have been there, but this year there's been something exceptional about it. And since you said Bangalore, I just thought of it. I remember when I joined the hotel, I was asked to do something or say something on the 15th of August. Because we joined on the 1st of August. So our seniors were sitting down, and I remember the lines that I actually spoke. I don't know how far that I remember, but I tried to. I'm sure most of you who born in the late 60s, early 70s, or in 70s would remember that. Zero बनाया था भारत ने मेरे भारत ने
दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत को, चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी जहाँ कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, आगे बढ़े और फूले फले, आगे बढ़े और फूले फले। मेरी इस कविता के रचनाकार श्री रॉकी भगानी जी हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे क्राइम पार्टनर हैं। This poem is dedicated to those people जब हम इंडिया वापस जाते हैं, अपने देश वापस जाते हैं, वो महक, वो एक फीलिंग होती है हमारे लिए, जो स्पेशली हम लोग जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग दुबई जैसे शहर में रहते हैं, यूएई जैसे कंट्री में रहते हैं, जहाँ हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होती। मैं सिंधी हूँ, मुझे कोकी, पराठा, हर कुछ हमें यहाँ मिलता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पिज्ज़ा, बर्गर, सब कुछ। बट वो इंडियन इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके लिए इंडिया जाना इज़ एन अचीवमेंट। हमारे लिए 3 घंटे की फ्लाइट है, हमें शायद हम उतने में तो अबू धाबी पहुँच जाते हैं, उतने में इंडिया निकल जाते हैं, सस्ती टिकट भी नहीं निकली। लेकिन वो लोग जो स्पेन में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। और जब होता है तो उनको चाहिए कि वो सारी चटकारे वहाँ से लेके, वो सारी यादें वहाँ से लेके वापस आए। ये कविता उन लोगों की। वो मिट्टी की खुशबू हमारी सांसों में बस जाना, बारिश हो या ठंड, हर मौसम का लुत्फ उठाना। होली, बैसाखी, नवरात्रि, दिवाली, हर त्योहार को साथ में मिलकर मनाना। हर नुक्कड़ पर चाय, चाउमीन और चाट के मजे से पीना और खाना। ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम घर वापस आए हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर जगह के स्वादिष्ट पकवानों को चखना चखाना। ट्रैफिक हो या बाजार, हर शोर, हर भीड़ का हिस्सा बन जाना। दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव, पार्टी और शादियों में नाचना नचाना। परिवार के साथ प्यार मोहब्बत की बातें, लड़ना झगड़ना, फिर उन्हें मनाना। ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम घर वापस आए हैं। विराट के चौके, छक्के और कटरीना के ठुमकों पर पब्लिक का सीटी बजाना। लता, आशा, नेहा और बादशाह के गानों को रिपीट पे बजाना। गाय और भैंसों का हर रास्ते पे अपना घेरा जमाना। फाइन से बचने के लिए हवलदार को साइड में लेकर पैसे खिलाना। ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम घर वापस आए हैं। हर फौजी और हर किसान को गर्व से सल्यूट मारना। ट्रेन की सवारी में चाय या कोल्ड ड्रिंक सोसा वालों का चीखना चिल्लाना। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घर पर बुलाकर उनसे गप्पे लड़ाना। पॉलिटिशियंस की रैलीज और गणपति के विसर्जन पर शामिल हो जाना। ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम घर वापस आए हैं। अपना घर, हम सबका घर। हमने हिंदुस्तान शायद छोड़ा है कुछ पल के लिए, पर मैं जानती हूँ कि हम सबके दिलों में हिंदुस्तान बसता है। हिंदुस्तान हमसे नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत। That grief family is there. A brother and sister is connected. And the sister cannot meet the brother cannot meet the sister. And if there is a death or something which happens, you are unable to go and see that. Whatever technology we have, we can see each other, we can talk hours and hours, and everything we can do on Zooms and WhatsApp and all that.
but the personal touch, the personal hug, that feeler is missing. And Martyr by Asmi Ashraf. Drops of blood oozed from his wounds, which were indeed an epitome of steadfast patriotism, dribbled into sand, etching his sacrifices for his land. Thrust from the rider, ripped him apart, yet till the end he fought like a warrior. Even on the verge of danger, when death flushed, his thoughts for a moment went back home, his parents, child, and a widow, who never knew about her upcoming ill fate. He promised her to be back jubilant and triumphant during his last visit. But little did she know the ironic fate has held for her. He was happy for every drop he shed, for he knew he was a martyr, whose soul and form belonged to the land that gave birth to him. Thank you. Asian Literary Society UAE chapter head since March this year. So everything else you want to find out about Asian Literary Society, you can get in touch personally. If you want to join the forum, you're most welcome. It's all about your talent, which are hidden. I think we saw so much of it today. So मेरी कविता है जो I have published 3 books of poetry, 2 in English and 1 in Hindi. They are all on Amazon. दिल से लिखते हैं और वो दिल की बात अगर आप तक पहुंच गई तो मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरे देश के लिए, मेरे भारत के लिए। महज देश नहीं, हर दिल का एक जज्बात है तू, भाषा और मजहब से परे, हर बंधन से आज़ाद है तू। नाम से है कोई सिख यहाँ, कोई ईसाई खुद को कहता है, मगर हम सब के दिलों में बस हिंदुस्तान ही रहता है राम का डेरा किसी के मन में, किसी जुबान पर रहीम की पुकार है, मत खींचो नफरत की दीवारें, हर मजहब की यही गुहार है। बनकर लहू का कतरा तू आशिक की नस-नस में दौड़ रहा, ऐसी दीवानगी और जुनूनियत किसी और मुल्क में है वहाँ। तेरी मिट्टी की सौंधी खुशबू इनके रोम रोम में समाई है, गर देश का है जज्बा दिल में सच्चा, माँ बाबा की बस वही कमाई है। तेरी सीमा पर खड़ा हर जवान तेरी ही तो लिखी तकदीर है, माँ तेरा एक छोटा सा टुकड़ा तो यहाँ हर किसी की जागीर है। तेरी मिट्टी को माथे से छूकर हर बाशिंदा यहाँ अमीर हुआ, कद्र नहीं थी जिसको भी तेरी, वो समृद्ध होकर भी फकीर हुआ। तेरा हर बेटा तेरी खातिर खाक में मिलने को आतुर रहता है, वो जुबान से भले ना कुछ कहे, अपनी आंखों से सब कुछ कहता है। देखकर उसकी कुर्बानी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं, और गर्व से एक माँ की छाती फिर फूली नहीं समाती है। अपना तिरंगा इतरा इतरा कर जब भी आसमान को छूता है, एक हिंदुस्तानी होने का अपूर्व गर्व हमें खुद पर कितना होता है। लास्ट की 2 लाइनें हैं। तेरी आबरू की खातिर जब भी कोई बेटा तुझ पे कुर्बान हुआ, इसी तिरंगे के कफन में लिपटकर उसका अंतिम सम्मान हुआ। मेरा देश है तू, मेरा प्रेम है तू, मेरा धर्म और मेरा ईमान है तू, तू ही तो है दिल की धड़कन मेरे दिल में बसती जान है तू। तेरे बिना क्या वजूद है मेरा नाम और मेरी पहचान है तू। धन दौलत सब मिट्टी है मेरा तो सारा जहान है तू, मेरा तो सारा जहान है।
Global. We really appreciate your support and cooperation on this, and definitely we love this space. It was a brilliant event, and thank you once again for supporting us in our initiative. Thanks, Malvika. Thank you, and we look forward to more events here. Thank you so much.